जब भी पत्ते गिरेंगे वो अपना आके क्लीन करेगा, ह्यूमन आएगा दूसरा और वो क्लीन कर देगा जिसके घर से पत्ते गिरे हैं। तो अब इसको आप कैसे दिखाओगे? ऑब्वियसली आप एक ह्यूमन दिखाओगे झाड़ू के साथ क्लीन कर रहे हैं, तो खुद से खुद ये आपका जो है वो दूसरे पर्सपेक्टिव में चला जाएगा। अब इसको आप टॉप व्यू से नहीं दिखाओगे, किसी का सर दिखा के क्या करोगे? आप पूरा फिगर बनाना चाहोगे उसका, तो वो आप उसके फ्रंट व्यू से दिखाओ। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो खुद आपको हिंट देगा कि आपको कौन सा पर्सपेक्टिव, कौन सा तरीका यूज करना चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं कि इसमें पहले थंबनेल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग को ऐसे रियलाइज हो कि मतलब करना क्या चाहिए। इसे जितना हमको लगता है थंबनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, हर थंबनेल एक हर साइज के। क्वेश्चन का बनाओ जो भी आपने सोचे हैं। और ये एक लड़का ने पूछा था कि रफ शीट मिलता है कि नहीं है। देखो, रफ शीट मतलब मिलता तो है, मतलब बैक में एक बड़ा सा पेपर मिलेगा। पर जितना हमको लगता है कि उसमें तुम ऐसे ही थंबनेल बना सकते हैं। पर हमने तो उतना यूज़ नहीं किया था। हमने बैक जो रफ पेजेस था उसको हमने उसमें यूज़ किया था मेंस एग्जाम में। मेंस में क्या होता है ना कि हम लोग को कुछ प्रोडक्ट फिजिकली क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए आइडिएशन प्रोसेस और जो मशीन कैसे, मतलब जो मॉडल प्रोडक्ट बनाया है वो काम कैसे करेगा, उसको दिखाने के लिए हमने रफ पेज को यूज़ किया था। पर मतलब ऐसे थंबनेल्स को क्रिएट करने तो हम प्रीलिम्स में तो यूज़ नहीं किया था। हमने जो थंबनेल्स बनाया वो उधर पे ही बनाया था, मेन पैनल्स पे ही, ताकि हमको समझ में आ जाए और हम उसको अच्छा से रेंडर कर पाए और टाइम मैनेजमेंट कर पाए कि टाइम कितना में हमको कितना रेंडर करना चाहिए। इसलिए शायद से हमको लगता है कि टाइम को अगर मैनेज करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। पार्ट वन और पार्ट टू में हम लोग को टाइम डिवीजन कैसे करना चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं सागर। हाँ, टाइम डिवीजन वो बेसिकली टाइम दिया होगा, वो आपको बता देगा कि इतने बजे आपका पार्ट वन जो पेपर है वो आपसे ले लिया जाएगा। वो पेपर शुरू हम्म। होने से पहले ही बता देगा। पार्ट वन देगा, वो बोलेगा आपके पास 1 घंटा है या 1.5 घंटा, जितना भी टाइम मिलता है उतना ही टाइम मिलेगा। उसके बाद वो पेपर लेगा, वो उधर उससे पे पहले। ऐसा भी नहीं कि मतलब आप, मतलब जैसे हम लोग का एग्जाम होता है ना कि सर लोग उधर से मांग रहे हैं आप लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब वो लोग फट से उठा लेंगे, ठीक है। इसलिए हाँ, वो आराम से बिल्कुल आएंगे, भी ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा मिस आउट नहीं करना है। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है। चाहे आप उसको मतलब बहुत ही सिंपल तरीका से बना रहे हैं, मतलब एकदम से आपने रफ स्केच कर दिया क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं था, वो भी चलेगा। पर आपका आइडिया जो है ना वो उधर पे एक्सप्रेस होना चाहिए कि हाँ हम ये बनाने कर रहा था। जो व्यूअर है उसको दिख जाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचा तो ठीक है। और टाइम डिवीजन में मतलब पहले का तो चूज करके वो एमसीक्यूज होते हैं, तो पहले से पेंसिल से टिक करके उसको तो ऐसे ही छोड़ दो। मतलब जो जो आंसर है उसका तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते रहो, वो खत्म कर दो उसको, तो फिल करने में इतना टाइम लगेगा ही नहीं है। हाँ, और फिल करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, एक भी थोड़ा ऊपर नीचे हो तो गड़बड़ हो सकती है, तो उसको आराम से हाँ। शांति से फिल करना। और जब ऐसा रो रो में जब नंबर्स मिलते हैं ना तो और कंफ्यूजन होता है कि हाँ, मतलब कौन सा आना था नंबर गिनने में, मतलब ऐसा मिस्टेक कर देते हैं हम लोग। हम लोग को आंसर पता रहता है तब भी हम लोग गलत वाला में मार्क करके छोड़ देते हैं। इसलिए प्लीज़ मतलब आप जब भी आप लोग मतलब ऐसा कर रहा है तो कॉन्शियस रहो कि तो हम कहाँ भर रहे हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है मेरा, इसमें तो नहीं हुआ है एनआईडी वाला में तो। पर जब हम 11 12 कर रहा था तब मतलब हमने भी ऐसा मिस आउट किया था, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही मतलब बने देता था इसलिए। एंड टाइम मैनेजमेंट तो ये हो गया, बेसिक है कि आपको चिल रहना है, आराम से हर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मेन पॉइंट ये। दूसरा कि अगर कुछ गलत हो जाए तो कैसे होता है, जैसे मेरा पार्ट बी था प्रीलिम्स का, जिसमें लास्ट क्वेश्चन आया था, हमें एक गेम बनाना था। एक पूरी स्टोरी दी गई थी, दो लोगों की कुछ तो बातें थी वो, कि कोई अपनी लाइफ को कैसे देख रहा है, उसको अपनी लाइफ से इतनी नफरत क्यों है, इस पे कोई तो गेम बनाना था। तो खुद को मेरे प्यार को, करना था। हाँ हाँ, तो मेरे को क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन वैसे थोड़ा मेरा मतलब प्रायोरिटी है, मेरे को पसंद है वो। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते रहता, तो वो जैसे ही मैंने स्टोरी पढ़ी मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हो गया था कि ठीक है, मैंने एक गेम बनाना है। एक ऐसे लूडो से इंस्पायर्ड काइंड ऑफ गेम है। बस वो हमने भी आप वही किया था। आपको, हाँ, आपको बस अपना मतलब गेम दिखेगा, और अगर आपने अनजाने में किसी की और की मतलब गुत्ती मारी तो आप उसके मतलब गेम में हाँ। शिफ्ट हो सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। तो ऐसा हमने भी काइंड ऑफ वैसे गेम ही किया था। था। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, पूरा बना लिया। इसमें मेन पॉइंट ये था कि गेम आपने बनाया, ठीक है, गेम्स के रूल देखे जा रहे थे कि आप कितना लॉजिकल गेम बना रहे हो। रूल्स लिखने थे उसमें 6 कि किस रूल्स के ऊपर ये गेम चलेगा। मैंने वो रूल्स लिख दिए। लिखने के बाद पेपर खत्म होने के बाद जब रिव्यू का टाइम बचा, कि मैं आखिर के 5 मिनट मिनिमम बचा के रखता हूँ, मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट तो बचा के रखूंगा कि मैं पूरा पेपर एक बार वापस देख सकूं मैंने क्या किया। जैसे ही वो देखा, मैंने रूल्स पढ़े, मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुई कि अगर ये बोर्ड गेम है और अगर आपको सिर्फ आपका खुद का गेम दिख रहा है, दूसरे का नहीं दिख रहा,
तो वो तो असली लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप 4 लोग साथ में बैठ के 6 लोग साथ में बैठ के खेल रहे हो तो दूसरा गेम आप छुपाओगे कैसे? या तो उसके लिए बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनानी पड़ेगी या वो पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं, एक बार तो हुआ दिमाग में अब क्या करूं। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं पीछे रूल्स में गया, बोर्ड गेम लिखा हुआ था, उसके आगे ब्रैकेट में डिजिटल लिख दिया, दिस इज अ डिजिटल गेम। अब बोर्ड पे नहीं खेल सकते, अब बोर्ड गेम है ये, आप पर खेलोगे से तो डिजिटली। तो हाँ। दिस वाज, ये मतलब मेरा एट द टाइम सॉल्यूशन था, और 2 मिनट बचे थे, मैंने फिर डिजिटल लिखा। मतलब मेरे को थोड़ा डर तो फिर रहा ही था कि मतलब गेम में बहुत बड़ा चेंज किया, उन्होंने बोर्ड गेम बोला था, अब बोर्ड गेम वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे डिजिटल। पर वो एक गलत रूल वाले गेम से ज्यादा बढ़िया था कि इसमें रूल्स सही है, मेनली रूल्स पे फोकस हो रहा है, तो हाँ गेम सही है ये उस हिसाब हाँ, से। तो हम भी बताएगा कि हमने ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया था, ठीक है। कि ये क्या था कि लास्ट में था ना सागर, ये एकदम से लास्ट में था, तो टाइम ऐसा बच भी नहीं रहा था। पर हम टाइम को देखा नहीं था एक्चुअली, टाइम बचा हुआ था, पर हम मतलब बहुत ही प्रेशर में आ गया था, तो मतलब हम सोचे कि मतलब जल्दी खत्म करने लगे, इसलिए हमने बहुत जल्दी जल्दी स्केच करने शुरू कर दिया। जैसे सागर ने बोला है वो लूडो काइंड ऑफ थिंग, हमने भी वैसे ही शुरू किया था। पर क्या हुआ कि मतलब शायद से मेरा जो लास्ट पार्ट था, मतलब ऐसा थोड़ा जल्दी की वजह से हमने अच्छा से मतलब रेंडरिंग नहीं कर पाया होगा। पर देखो, हमको जितना समझ में आया कि आपका आइडिया दिख जाना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और ऐसा भी आइडिया नहीं लेना है जो कि मतलब बहुत मुश्किल है जिसको मतलब एक्सप्लेन करना, क्योंकि बाद में आपको उसमें लिखना भी था कि वो गेम को कैसे खेलेगा। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा गेम बना दिया तो बाद में आप भर ही नहीं पाएगा उसको, तो बहुत दिक्कत था। इसलिए आपको थोड़ा सा लॉजिकल गेम ढूंढना है जो कि मतलब आप खेल सकते हो, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और शायद से उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं था ना सागर, कि मतलब किसी से इंस्पायर, कोई गेम से इंस्पायर होके हाँ, नहीं उसमें बना कोई सकते। रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जबकि हाँ। एग्जांपल दिए थे कि आपको कोई बोर्ड गेम बनाना है, लाइक हम्म। लूडो और ये सब, कोई साइड में 2 एग्जाम क्वेश्चन में दिए थे कि ऐसे कुछ गेम से इंस्पायर होके। तो अब हम्म। उनमें क्या है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय एक ऐसा गेम बनाओ जिसमें कुछ अलग हो, सिंपल। हाँ, कुछ अलग हमेशा इंटरेस्टिंग हो। कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, सिंपल चीज भी हम्म। अलग हो सकती है। बस हम्म। पॉइंट ये है कि वो आपका कितना लॉजिकल चीज बना रहे हो। अब मेरे जो रूल्स थे वो बिल्कुल एक्यूरेट थे, वो मैं लिख के दे सकता था, गारंटी थी मेरी कि उन रूल्स में आप कमी नहीं निकाल सकते। एक कमी मेरे को लास्ट में पता लगी कि रियल लाइफ में इसको मैं उन्हें समझाऊं कैसे कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल भी है, तो कैसे पॉसिबल है। तो मैंने हम्म। उसको चेंज कर दिया डिजिटल में। तो वो एक एट द पॉइंट सॉल्यूशन था। तो आपका दिमाग शांत रहेगा तो ही वो सोच पाएगा, नहीं तो मैं पैनिक कर जाता, और 2 मिनट में तो फिर आप कोई भी रूल नहीं बना सकते। और मेनली एनआईडी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको इमेजिन करने से नहीं रोकते, आप कितना भी कॉम्प्लेक्स चीज बनाओ, मेन होता है उनका कंस्ट्रेंट। उनके कंस्ट्रेंट रहते हैं कि रूल 6 ही हो सकते हैं। अब 6 रूल में आप कोई एकदम रोलर कोस्टर जैसा इतना कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बना सकते। आपको बेसिक सिंपल लॉजिकल और प्रैक्टिकल चीज बनानी है। ये प्रैक्टिकल चीज बनाना एनआईडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि आर्ट्स वाले जो कॉलेज होते हैं वो आपकी इमेजिनेशन देखते हैं कि कितना अलग सोच सकते हो दुनिया से। हम्म। इसमें ये है कि दुनिया से अलग तो सोचना है तुम्हें, पर वो चीज लेके दुनिया दुनिया नहीं लोग के लिए आनी। सोचना है। हाँ, तो बेसिक है कि लॉजिकल होना चाहिए। हम्म। तो मेरा मेरा भी ऐसा ही था सागर, तुमने जैसे किया ना शायद से, मतलब मेरा भी वही था कि मतलब अगर तुम वो गेम में हमने कैसे डिजाइन किया था कि तुम इधर से जा रहा है, वो लोग भी मतलब काइंड ऑफ वो स्नैक गेम जैसा था। अगर तुम दूसरा लोग का साइड जाने की कोशिश करेगा तो तुम्हारा चीज़ को खो देगा, ऐसा टाइप का मतलब कुछ बनाया था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग ये था। क्वेश्चन है, दोनों पेपर साथ नहीं, दोनों पेपर साथ नहीं मिलते। पहले आपको अपना पार्ट ए मिलेगा और उसका एक फिक्स टाइम होगा, तो आप उसको जल्दी करने के चक्कर में ये नहीं कि उसको जल्दी किया आप दूसरा पेपर मांग लोगे, वो नहीं देंगे। आपका फिक्स टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे बाद ही आपको दूसरा पेपर मिलेगा। तो पहला पेपर का पूरा टाइम पूरा अच्छे से यूटिलाइज करो, उसको जल्दी करने के चक्कर में खराब मत करो। और ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको रफ पेज मिलेंगे, वो अच्छे 4 4 पेज मिले थे शायद रफ, बढ़िया रफ पेज पीछे मिले थे। तो मेन शीट पे आप रफ वर्क मत करो। अगर बेसिक आपको कोई थंबनेल बनाना है तो बिल्कुल छोटा राइट टॉप में बना लो, जो लास्ट में अगर चाहो तो इरेज भी कर सको, लाइट बनाओ। और ना भी इरेज करो तो कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, कि कुछ चीजें हम्म। ऐसे रफ छोड़ सकते हो आप। हम्म। पर जितना हमको पता है कि मेंस में जब वो प्रोडक्ट बनाने देता है ना, उसका तो बना ही बनाओ, कि उसका जैसे भी टाइम निकाल के ना। मेंस में मतलब हम लोग को ऐसा ड्राइंग भी करने मिलता है, और जो विजुअल ऑडियो वाला है वो भी मिलता है। पर जब आप लास्ट में प्रोडक्ट बना रहा हो तो मतलब फिजिकल प्रोडक्ट तो बनाएगा बनाएगा, पर उसको यूज़ कैसे करना है वो सब समझ में नहीं आता है। वो लोग ऐसा बोलता तो नहीं है कि यहाँ में लिखो, सागर ऐसा नहीं बोला था ना हम लोग को कि ऐसा लिखो बोल के उसके बारे नहीं में नहीं, प्रोडक्ट के बारे लिखने में। का कुछ नहीं ऐसा बोलते वैसा उनका कुछ नहीं बोला था। पूरा। पर इनकी आपको, इंस्ट्रक्शंस इतनी भी क्लियर नहीं होती, मतलब हाँ, बेसिक तो ऊपर पर ऊपर आपको बता लिखना देते हैं। चाहिए, क्योंकि हाँ, ताकि व्यूवर्स को, जो एग्जामिनर है उसको पता चले कि जो तुम्हारा मॉडल है वो फंक्शन कैसे करेगा।
और उसमें मतलब करना क्या क्या चाहिए आपको? तो जो मॉडल बनाया था उसमें बेसिक ये था कि जैसे मैंने मॉडल बनाया तो मैंने क्या किया, उसके जो क्वेश्चन था उसके नीचे एक बहुत सिंपल डायग्राम, कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंपल, कि बिल्कुल शेप से ही एक डायग्राम बना दिया और बिल्कुल उसमें मार्क कर दिए मेन पार्ट्स, कि ये यहाँ हम्म से रिंग है, यहाँ से ये घूमेगा, यहाँ पे स्टेबल है इस स्ट्रक्चर से, बस। बस हम्म। उसे समझ आना चाहिए, उसे इतना सुंदर नहीं दिखाना। अब हाँ। सुंदरता का मेरे को याद है आर्ट का, जैसे मेंस जो हुआ था उसमें एक पेपर था कि 10 फ्रेम बनाने थे हमें। 10 फ्रेम में 5 में बनाना था हमें हमारा पर्सपेक्टिव, 5 हम्म। में बनाना था जिस बंदे को हम देख रहे हैं उसका पर्सपेक्टिव। अब उस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था, वो बनाना था आपको रेलवे स्टेशन का एक व्यू, जिसपे एक बंदे को पैर में लगी हुई है और वो स्टिक जो हाथ में पकड़ के ऐसे चलते हैं, मदद उसकी मदद से वो यूज करके चल रहा है, तो उसको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत क्या आ रही है, रेलवे स्टेशन पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बनानी थी। उसमें फिर मेरा ये रहता है कि मेरे को पता होता है कि मेरे को उसका प्रॉपर टाइम मिला था, ये 30 मिनट मिलेगा, क्योंकि मेंस में क्या होता है ऑडियो विजुअल होता है, तो आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप ऐसे अपना चेंज नहीं कर सकते कि 30 मिनट ये मिल रहा है, अगर चलो थोड़ा कम रह गया तो 5 मिनट इस क्वेश्चन को और दे दूंगा, वो आप लास्ट में कर सकते हो, पर उसमें ना। तब तक नहीं कर सकते जब तक चल रहा है। एक हम्म मिनट। हाँ मैं एक मिनट रजन। तो उसमें क्या था, मैंने जैसे ड्रॉ करना शुरू किया तो वही है कि अपने ड्रॉ करने लगते हैं तो उसमें एक बार खो से जाते हैं कई बार, कि ऐसे मजा आने लगता है, अपने को क्लियर दिख रहा होता है दिमाग में कि ये मेरे को बनाना है और ये मुझसे बन भी रहा है, तो आपको मजा आने लगता है और आप एक ही फ्रेम में रह जाते हो। तो मैंने उस पहले क्वेश्चन में 10 मिनट में बस एक ही फ्रेम बनाया, मुझे 9 फ्रेम और बनाने हैं और वो एक भी पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने टाइम देखा, फिर मेरे को लगा ये तो गड़बड़ हो गई। उसके बाद मेरा बस आइडियाज थे दिमाग में, मैंने इतनी फास्ट ड्राइंग की है, 20 मिनट में 9 के 9 फ्रेम पूरे। और बहुत ऐसे मतलब अगर एग्जामिनर थोड़ा सा, एग्जामिनर का मूड खराब होता ना, वो कट मार देता, इतनी खराब ड्राइंग हम्म। की है। पर तो पॉइंट ये था वो ड्राइंग्स ऐसी थी जिनमें आइडियाज समझ आ रहे थे, मैं व्यू क्या करना। फिर मैंने मेन चीजों पे फोकस किया, सीडी है उस पे रैपर पड़ा है, उस पे पैर फिसला, ये दिक्कत आ सकती है, तो बस रैपर दिख रहा है, फिसलने का एक आइकन काइंड ऑफ दिख रहा है, और फिर मैंने उसको कवर अप कैसे किया कि आप खाली पेज भी मत छोड़ो, वो बहुत अजीब लगेगा। तो जैसे ही पे ऊपर बॉर्डर एंड हो रही है, तो वहां पे मैंने एक हल्की सी फ्रॉक बना दी, मतलब कोई ह्यूमन ऊपर जा रहा है, नीचे से हल्का सा सर और शोल्डर्स बना दिए। तो अब उसमें क्या इमेज में दिख रहा है कि 3 से ज्यादा लोग हैं, मतलब इसने बंदे ने थोड़ा ऑब्जर्व किया, आसपास की चीजें बनाई है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि पूरा ह्यूमन फिगर नहीं बनाया फिर मैंने। हम्म। तो वो पॉइंट है। तो हमने ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया था कि जैसे कि मेरा जो ट्रिक्स रहा, टिप्स रहा था कि मतलब पहले आप क्या करते हैं कि लाइट स्केच करते हैं, क्योंकि हमको भी पता था कि मतलब टाइम उतना तो होगा नहीं है और बहुत लंबा क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, पहले पहले जैसे हमने ट्री वाला में जैसे किया था वैसे ही, क्योंकि 10 फ्रेम बनाना है तो हमने पूरा लाइट लाइट से मतलब क्योंकि हमको इतना लगा था बस हमको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और हमको उसको सुंदर बनाना तो वो हम बाद में देख लेगा, अगर टाइम बचता है तो हम उसको जितना सुंदर करना है उतना कर लेगा। अभी क्या करना है, हमको पहले मेरा आइडिया को एक्सप्रेस करना है, कि मतलब दिखाना है कि कहना क्या चाहता है ना। इसलिए हमने पहले लाइन लाइन से उसको बनाना शुरू कर दिया। उसके उसके बाद क्या करते हैं कि जो अगर उसमें ऐसा कोई सीन दिया है, क्राउडेड सीन दिया है, तो ऑब्वियसली उसमें 3 4 से ज़्यादा आदमी तो दिखना ही चाहिए। पर ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से फुल्ली पर्सपेक्टिव में मतलब एकदम से अच्छा सा दिखे ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस कोशिश करो कि अगर कोई दूर है सामने है तो वो डेप्थ का फीलिंग आना चाहिए, और पता चलना चाहिए कि हाँ वो ह्यूमन है, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। तो हमने पहले तो ऐसा बनाया पूरा सीन को। उसका क्या किया, मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया था, तो हमने मेरा टाइम मैनेज ऐसे ही करते हैं कि पहले हमने बना दिया, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि टाइम मतलब हमको कितना रेंडर करना चाहिए, क्योंकि सागर जितना हमको लगता है कि टाइम मैनेज करने के लिए तो वही देखना पड़ेगा कि कितना डिटेल डालना चाहिए हमको एक फ्रेम में। क्योंकि जैसे हाँ तुमने वो बोला है फ्रेम में। कि एक चीज़ बहुत मज़ा लग गया तो मतलब तुम उसमें पूरा घुसने लग गया, ऐसा हाँ बिल्कुल मत करो। इसलिए पहले तुम पूरा सीन को बना लो, उसके बाद पूरा सीन को बनाने के बाद क्या करो कि टाइम को कैलकुलेट करके थोड़ा सा सोच के उसके अकॉर्डिंगली ही तुम उसको रेंडर करो ना सर। हाँ, आइडिया आप बेसिकली ये करो ना, आपने जैसे एक क्वेश्चन के लिए टाइम बांटा है कि 20 मिनट में मुझे क्वेश्चन पूरे करने हैं, 20 मिनट में उसमें आपको मान लो 5 फ्रेम बनाने हैं, तो पर फ्रेम आपके पास 4 मिनट है। 4 मिनट में आप सिंपली 1 मिनट ही मांगो आइडिएशन का, कि मैं आइडिया सोचूंगा 1 मिनट। अब ये है कि 5 फ्रेम है तो बेसिकली कम से कम 3 आइडियाज तो आपको आ ही जाएंगे इजीली। तो बेसिक आइडियाज मतलब कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, बेसिक आइडियाज को पहले हटा दो, इतने बेसिक मत चुनो, बेसिक आइडिया शुरू में हटाते जाओ, जब तक आपके पास अच्छे आइडियाज और डिफरेंट आ रहे हैं आप वही चुनो। और जब जैसे 3 आइडियाज अच्छे आ गए, आपने चुना, आपने फटाफट किया,
अब चौथे फ्रेम में, चौथे पांचवें फ्रेम में आपने सोचा, 1 मिनट आपके पास टाइम था कि सोचा कि कोई अच्छा आइडिया आया या नहीं आया, तो आप उसको एक बार रोक दो। अगर ऑप्शन है कि आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें आपको आइडिया आ रहा होगा, तो आप वो करो और एंड में आओ इसमें। और अगर फिर भी आपको अच्छा आइडिया नहीं है, तो एक सिंपल आइडिया पर सही आइडिया उसमें ड्रॉ कर दो। उसको खाली भी मत छोड़ो, उसको गलत भी मत बनाओ, सिंपल ज्यादा सही रहेगा किसी गलत आइडिया से। और ये चैट में किसी ने पूछा है, चैट में क्वेश्चन आएंगे तो। सागर। हाँ, स्टोरी बोर्ड में जैसे कोई पूछ रहा है कि स्टोरी में सिंपल स्टोरी लें या कॉम्प्लिकेटेड वन। सिम और स्टोरी का मेन क्या होता है, स्टोरी कोई रीड करेगा या फिर मतलब इमेज से आपका स्टोरी समझेगा, तो वो ज्यादा। हाँ, तो इफ द स्टोरी इज लाइक मोर सिंपल, वेरी एक्चुअली क्या हो सिंपल गया ना स्टोरी कि इज नॉट। सागर, कोई कोई स्टूडेंट्स को ना मतलब शायद से हिंदी प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है, तो क्योंकि ओके ओके हम दोनों भी मतलब इतना फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। तो क्योंकि हम भी फ्लुएंट ओके, नहीं है बट इंग्लिश नो, में। आई कैन लाइक टॉक इन तो इंग्लिश हम भी मतलब कोशिश लिटिल करेगा बिट। कि इंग्लिश में इंटरेक्ट Yeah, करें, ठीक है। sure, sure. हाँ। So, like the storyboard question, the if the story is very simple, then it's boring. The examiner will like didn't find any interest in it. So try to make a interesting story, and a complex story is not always interesting. Like a complex story can like make you like round and round. You won't find any like end to the story. So यस। you are very short, like short time frame and short images to draw, short lines, like you have selected lines, you can only write 4 to 5 lines for a story. They have given you constraints, so you are very. Yes, what I feel about the story writing, I feel like first we have to write the proper introduction. The starting point, it should be good, and then you can add some twist or some like interesting thing in middle, and the ending. You should have some proper ending, like what actually happened and like the finish one, okay. And you should have conclusion, and if you can also add some moral to it, okay. So it makes the story more interesting, I feel. These three things you should always have in your stories. Without ending, it's like meaningless. Without twist, it's boring. All can make that kind of story. Is it, Saga? That's right. I'm like not that well, that much good in story writing, but for the mains paper, I want to share one thing. Like prepare for everything. Like the question they like for the project, they give us like four like kind of 8 sticks, plain bamboo kind of sticks, and a piece of cloth, and they also give us Fevicol. So when I was preparing for my mains, I like skipped the Fevicol part. I try to avoid as much as I can. Like I didn't want to use any Fevicol because my faculty told me that they won't give you Fevicol, so practice without it. So anything can happen. So practice like as much as you can. Experiment with objects. Experiment with different things. Anything can come in the like project part. Any kind of material. So, like, as I know about the that men's exam, uh, I took the glue with the hard one, Fevikwik. I took Fevikwik because I feel like joinery is very like um, what can I say? uh, Experimental for me. Like I don't know much about it, so I don't want to experiment on either. Like I don't want to take a risk, so that's why I directly brought Fevikwik. They won't say like you have to bring Fevikwik or Fevicol or this or that. They will just like which we had in our previous one. They only mention they only mention like we have to bring glue. So that's why I brought Fevikwik because like it dries very quick and it stick very well. So I also will suggest to use that kind of thing. Human anatomy में someone has asked that I am not very good at human anatomy. So basic point is that don't make a complex human. Make a simple human, but its structure should be like clean. Right? Don't mess it up. No overlines. No like yeah. So don't mess it up. The line should be clean.
Main point is human anatomy. They will like check your proportions. Mm. And another question Uh, was, what's the difference of storyboarding and comic writing? about the There, like about the question, how they will give the question papers. In prelims they will give question paper like one paper, there will be everything, okay? And the mains you will have like multiple question papers, separate question papers, okay? So for the audio visual test you will get separate question paper, and for the like writing one you will get separate, and the last will be the physical work, okay? So you will have separate papers you have to complete within a given time, okay? I'm not good with will the prelim score affect overall rank? Nah, 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 nah. The prelims rank, like which I heard about this year, this exam, they won't be adding this prelims score to main score. I guess it's just for like entering to the mains exam. Is it, Sagar? yeah, yeah, that's all. And the main point is the NID main, there are main like kind of few topics that it focuses on, like perspective, your observation. Like in an answer, if they have like try to practice perspective without images. When I was preparing, I like you look at mobile and like try to draw the same perspective. But the point is, when you draw without looking at images, you miss out on many things, like the small details, the small things in a view you like miss out them. So try to draw a image like a perspective view live, and if that is not possible, try to look at an image, then close the image and draw the perspective without looking Uh, at the image. Yes, yes, yes. What I feel about this making a practicing a thing, I feel like if you practice from like your device or like from somewhere reference, uh, then you won't understand it. You will just copy it. Okay, like if you did lot of practices, then you can have it in your muscle memory, but it won't make you understand about the things, okay? Like the perspective or like how things work. So better you should go outdoor and do some outdoor sketchings. Try to understand like how the perspective works. Like if you try now also, you can copy a very well like you can draw very well perspective drawing from the Pinterest or like from anywhere, okay? But if you go outdoor and try to like draw the same kind of thing, then you can't make you can't bring that kind of perfection in your drawing, is it? Now, look that there are very few days left. So you should mainly focuses on your line quality. Try if your line quality is not that good, try to like work on that. And rest of all is like fine. It's not very like difficult. And in perspective questions like the crow question which was in our paper, you should like mainly if the question is basically on perspective, like you have to draw a perspective of a crow, then try to make the perspective more engaging. Like not a very simple, not very simple kind of perspective. Try to like engage in that and like make it something different, kind of that, and try to add as much as detail you can. Like in the perspective question we like have 35 minutes, so in Mm, 35 minutes depends you on can time, huh? easily, Yes, depends yeah, on time. you Like can how easily much add time a you have. lot of details. So try Well, to add Sagar, can basic you small. please show the example as we are discussing also earlier? Can you please share the question and you said now, I mean, and how you have attempted, because that will give them the more better idea in the life if we show, that will Yes, be sir. helpful further. Yeah, For Jay. just a thumbnail and then like how you Yeah, did sir. in I will like offline. try to show the example for now. Yes. Actually, Yes. I have to go somewhere, so this is the last I can do for now. Okay. 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 Well, that's absolutely fine. You can do it. Yeah, We yeah. 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 just a second. Like right now, I have this book. Just a minute. So very important to have it. Like the idea is those are very So this important. is kind of like if I start my question, I have basic idea that I have to draw a stall, which I will be looking from top. So basically a bird view.
Then the top is bigger, the bottom is smaller, and try to draw it realistically. But have you seen like manga comic style drawings? So they are like very engaging and they have a kind of different art style to try Mm-hmm. to do that. And then you start to add different things. Like first I have to add a door, kind of a store will have a shutter door. So then add a shutter, and after that it also has a cart outside. Try to add the cart. It was kind of a juicer kind of question, like you have, that was a juice shop. Basically, you are seeing there are fruits kept outside the shop. Like there is like staircase kind of a object where different kinds of fruits are placed, like oranges. If it's a juice shop, oranges, papaya, different kind of fruits are placed. After that, you can add the shed. It also has a shed, and in this you can add different details like it's a cloth, so it's not straight. Then you can add a wooden stick. Indian carts, Indian juice shops have a like this kind of structure. After that, you can add more details like a window, a banner, like it's a name on it, a 3D banner. You can put a name. You can put this name and these kind of stuff at the end. Now you can focus on this part, like add details to this. Like it's a 3D view with a iron plating. It's a 3D wall, so you should make it like these two lines depict that this it's have a very like breadth, thickness kind of thing. And then you can, this also has a cloth on it so that dust and these kind of things won't collect on it. Make a cloth. Remember, these cards have their names all over it. Like there will be also a name here, a name here, and then you can add more details. Like these kind of shops have posters on them, half torn posters, tying posters, kind of things. People like paste different posters on them, and these are old shops, so they must be broken. Kind of paint is ripped off, and the shed, the top part of this, the terrace kind of thing, also have waste like garbage, scrap bottles. Then you can add more parts like a road. These are on, basically these kind of shops are on the corner of roads, so you can add uh, like double kind of road, crossing road behind this. After that, when your main thing is completed, you can add a human, because without a human you can't like work in a shop. So add a basic human, then add a machine, more fruits. Also, you can add different like garlands or lights, because some shops have these kind of accessories, like something is like hanging around it, a waste material beside it, also a dustbin. Dustbin is necessary. Some garbage, scrap, glasses. If you have time, then you can also draw different humans that are like buying the juice. And if still you have time, you have completed all the details. Like I have drawn it very roughly and fast,
That's why it's done in such a short time. But you have to draw it very clean, neat. Like I have only one pencil right now, so शायद से that's why पोजीशन the भी शायद से बढ़िया नहीं था होगा, इसलिए मतलब हाँ ऐसे। पर हाँ फॉर योर so काइंड इन्फॉर्मेशन की मतलब ये सागर हम लोग का एनआईडी का जो बैच है उधर का कॉलेज का, उसका एडीजीसी का टॉपर है, ठीक है। This drawing has giving a very good idea, though you are doing from rough इससे जो है, but yeah clarity है, proportion, अब shape, अब बाकी सारी yeah चीजें देखी so तो, और जो like आप you आईव्यू can बोल रहे हो, focus on आई more details, like this yeah, is a door, I view is so more you clear. can't make Yes, this empty. You have to make few cards in it, because in juice shops there are correct. cards, fruits, and more like bags of fruits. So focus in a perspective, there's only two things, line quality and the perspective. So you have to like make the drawing such realistic, like such details should be in it. If the time is proper, like you have given half an hour, so you have to add more details. If the timing is less, like in a 10-minute question, the I have to just focus on the line quality and the perfect perspective. So some details can be like left out. But in a question when you have 30 to 35 minutes, you have to completely like give all the details which you can show. If still time is left, which will not be there because I have drawn it rough, so the time is like this low. Still the time is left, then you can add different shops on different side of the road. Basic. Then don't add different details in those shops. You can like I have drawn the shops like this in my real paper. Just uh, block with the door with a cart. So this is also a shop. It's depicting that this is a shop, and it's like engaging with the drawing and showing the difference between the depth of the road. So now it's easy to understand that this is a road. Without that shop, it was like just a single line which was roaming around. And then if the crow is sitting on a pole on a height, the question was kind of this, that it was sitting on a pole. So you can also add wires, like big wires will be going in. These are kind of details you have to focus. If you have proper time, then these are the details you have to focus. And then you can add names or different blocks there that depicts a basic form of a shop, because the juice seller shops are not in like a neighborhood, they are in a like market, so there must be different kind of shops around it. You can add stray dog or cat roaming here and there. Because of the waste, some animals will come there. Rahila. Yes, and also what I feel about this kind of question, uh, you should show mainly focus on perspective, and some of the questions they used to give like from your point of view and like from others point of view, so you should understand it and should try to show like if they are saying you are this and that and your height in this and that and you are watching somewhere, okay, then you should show like if you're looking forward, then like if I only visualize show the picture without like any element of myself, then it won't be very interesting. So I will try to add some of my hands, like if I'm grabbing something and looking through the window, or like if I'm looking like downward, then I will try to show my feet. So it's very important, like okay, you should show some of the elements of your like parts of your body, so it can be like well known, like it's your point of view. Well, Desna, you wanna ask the question? Yes, sir. So, when we're making any composition, if we're focusing on line quality and perspective, what matters more, the drawing aspect of it or the idea that we show? uh, So there are like two kinds of question. One is a very direct and simple question. It will like directly ask you to draw perspective. That's enough for the question. And the other question is like it's very complex kind of question. You have to imagine, you have to like visualize, you have to think, you have to create. So when the question is very direct and simple, you have to focus on the line quality and perspective both, because it's very direct and you have proper time, and you have to also focus on how much detail you can put it in, how interesting can you make the composition.
If the question is very simple and straightforward, try to make it as interesting as you can. And if the question is very complex and it's demanding a lot of thought and energy, then just try to like make your line quality perfect, and the solution should be right, it should be logical. Okay. Yes, yes, yes. Like it's depend on the question, like which kind of questions they give. If easy, then everyone will be making the same one. So try to be unique. If the question is easy, okay, then try to be unique, and you should make all the things, I guess, little better. And if the question is very complicated and like you have to show a lot of things, then try to be minimal and try to express your idea. That's important, I guess. और क्या One पूछा? more question. Yes. Online, I hear a lot of people talking about that they used fine liners in their exams to bring out their compositions and work. Is that a good idea, or should we just stick with pen and pencil? No, from my point of So view, I will stick with pencil only. सागर तुम्हारा क्या राय है? From my point of view, I will basically adjust my work according to the time. If I have proper time that I can complete my artwork with the fine liners. If you have like less time and your half artwork is with the pencil and half is with the fine liners, it's very bad. Don't do that. Check your time. If you have proper time, and like look at the question, it's a very simple question, draw perspective, then it's like basic thinking that they will focus on your line quality. And with fine liners you can't like show them the line quality. Fine liners are like fixed lines. Yes. So try to use these kind of things in a very product kind of based question where Uh, there is no final. Like we had a question like we have to draw a nail and a hand and hand, and the basic thing they were focusing on was the proportions, like how can we draw that. Then that's fine liner is fine in that kind of question because we have to draw clean and thin lines, then fine line is perfect. But in a question where they're asking you perspectives, like the first question, draw four frames, the tree question and the crow question, in these kind of question don't use fine liners. Like try to show them your qualities. Like if you are good at line quality, then show them that. Why yes, like actually, I feel like if you are like very like experienced with the like a fine liner, that technical pencil, then it's good. But don't listen to others. Okay, like this will be very good. You can do this and that. Don't listen to that. Like if you're like well, what can I say, like uh, if you're well experienced about that pencil, then you can use it. But don't experiment on the exam hall. Okay, if you're good enough with confident with the technical pen, you can definitely use it. Okay, if not, then don't listen to others. Stick with your thing, whichever thing you like prefer. Okay. Jem, sir, I have to go. Like it's a very important thing. I have to go. Yeah, Uh, you carry on. Now we'll take a uh question, sir, as you have discussed. Thank you so much for your okay, sir. time. We have discussed about it. And the meanwhile, rest of you, we'll give you the time to ask the questions. आप क्या कर रहे हो? और NID group is also there. People who are not added, make sure you join the NID group. There, Rajim is also there. He will answer it your all the queries. Okay, and especially thank you, Sagar. Thank you so much. thank I you, know. I sir. Thank mean, you, you guys. have given the Thank you, time Sagar. and we need your input more, so we'll connect and discuss. Thank you so much for well explained. Yeah, or I understand you all have exam pressure, all like things are, but make sure आप जो भी कर रहे हो शेयर करो, डिस्कस करो, बताओ अच्छा कर रहे हो आप लोग, बढ़िया, अब हम लोग ऑन ट्रैक हैं. तो we'll go one by one. आप quickly, Ajim, I think better. I mean, it has to be more if we can ask individually because many times it's understood. I will not discuss many examples are the moreover like हम समझ जाते हैं नहीं मुझे समझ में आ गया I got it. So better let's have a one-on-one discussion. At least the people who have turned on the camera, we will all will come to you or one-on-one we'll discuss and then we'll conclude the session before the ending. And for everyone, what has to be next 4 5 days plans are how quick and better you can work on. Not require a pen, pencil, final और this NID के एग्जाम के लिए बहुत ही सिंपल है. टाइम ही नहीं है आपके पास में. आपने देखा वही सारी बातें जो लोगों से पहले बताई थी. टाइम ही नहीं है आपको पेपर में.
एक टाइमलाइन सेट करके उसी में मैनेज करना है अपने। जैसे सागर का ही फीडबैक देगा, उससे समझ में आ गया नहीं जी मेरे पास 20 मिनट या 10 मिनट लगा दिया, अब छोड़ना है इसको, आई हैव टू मूव फॉर अ नेक्स्ट। यू कैन नॉट गेट स्टक विथ योर इमोशन जोनी जी। अब तो ये क्वेश्चन 1 घंटा करना है, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, है ना। वो नहीं करना है वो सब चीजें। तो आपको इसलिए सारे पेपर के साथ स्ट्रैटेजी के लिए, प्लानिंग के लिए, उसके लिए बैठना है। ये जो 4-5 days है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। देयर आर फ्यू स्टूडेंट हु जस्ट स्टार्टेड, उनके लिए भी वही है। यू हैव टू डू अ रिवर्स वे, राइटिंग पेपर, come up with your point and discuss. Until you will not discuss, will not able to help you out with this. Either you are writing optional also, है ना। जैसे कि there are few students who are writing, okay, NIFT is the main goal and there are other exam, NID is optional, but still if you are doing good, it will give you more confident. If it might be your first or second exam, few of you have given MIT, now writing NID. So the exams, we should try our best in the exam, that's it. So we'll start with Anushka. Anushka, do you have any queries? How you are doing it? और not only the query, question नहीं है तो भी बताना जो आप क्या कर रहे हो अभी, आप जो वो बाकी लोगों को हेल्प करेगा. So let's have a quick, discussion with all of you. Yes, starting from Anushka. Sorry, sir, I had a network issue. They always take Sorry, all sir. the Yeah. network Yeah, issue. Can you sir. hear me now? Can you repeat? The idea of this Q&A session is where you will tell what you are doing it. If you have any query, if you don't have, it's okay. Like what is your plan for next 4-5 days, so that we can give you input on it. Yeah, sir. So That's how we firstly, go sir. to everybody, right? Yeah. Yeah, sir. So firstly, so मेरा प्लान कुछ ऐसा है, मैं अभी 2 मॉक्स देने वाली हूँ इस हफ्ते में, पूरे जस्ट 2 मॉक्स, उसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाली। और डेली मैं एक पर्सपेक्टिव कर Good. रही हूँ अभी। और अभी लाइक जब Hmm. क्लासेस होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं हम, तब मैं कुछ ऐसा रैंडमली लाइन स्केचिंग करती हूँ या फिर कुछ थंबनेल्स जैसे मैंने अभी बनाए हैं। तो मैं कुछ ऐसा करती रहती हूँ। कैन आई शो यू? ओ इसलिए अनुष्का, Okay. अनुष्का ही है ना ये? यस तुम यस ये 2 हफ्ता में हाँ कितना जी. मॉक टेस्ट कर रहे हैं? जस्ट 2, उससे ज्यादा मैंने प्लान नहीं किया अभी तक, बिकॉज फिर बाद में इस वीक में अजीम, नॉट लास्ट 2 week, अजीम सी सेइंग इस वीक में वो 2 mock paper करेंगी. दिस इज द प्लान टारगेट सी हैज. ठीक है, पर मतलब ऐसा क्यों क्यों लिमिटेशन रखना है कि मतलब हमको ये वीक में इतना ही करना है? मतलब मिनिमम रखो, पर मैक्सिमम कभी ऐसा लिमिटेशंस मत रखो मेरा ख्याल से, मतलब इतना ही करना है हमको क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर मतलब बहुत सारा मिलता है शायद से अवेलेबल, तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी और हो दीज जाएगा आर इनपुट, और नहीं नहीं, टाइम अभी मैनेजमेंट भी हो मैं, जाएगा। अब या अजीम अभी मैं बता दूं, 10 mock paper ऐप में है, 5 आपके उसके अलावा जो है ग्रुप में या हार्ड कॉपी ये अवेलेबल है, और 5 ऑल बैक स्टैंड बाय में है। तो 20 mock paper आपके पास बीडीएस के लिए सिर्फ इग्नाइट के में है। आपने पहले 5 सेट ऑफ करके कंप्लीट करना है, वो कर लिया आपने तो फिर अगला लो। मिनिमम रिकमेंडेड है जो आप 5 कंप्लीट करो। आपने जो भी करा यू कैन टेक इनपुट, but anyway you all are be open, like Anushka, whatever is your plan, do tell us. So we are just giving a suggestion here. The add on is, आपने जो 2 प्लान करा 2 खत्म कर लो। वो कब होता है, फीडबैक ले लो, काम कर लो, रिव्यू कर लो, पुराना स्ट्रैटेजी देख लो, क्योंकि मैं भी आई एम ऑल्सो नॉट सो फैन ऑफ जो आप मतलब काम ही करते रहो बहुत सारा। इंटायर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, जो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगी, जो हम बात कर रहे थे, तो कैसा पेन यूज करना है, क्या पेंसिल यूज करेंगे, क्या लेके जाना है, वो सारा। एंड देन इफ यू हैव अ टाइम, सो व्हाट अजीम हैज सेड, प्लीज फॉलो, ट्राई डूइंग इट। एनआईटी जाना है ना, तो और ट्राई करेंगे, है ना। हाँ सर, कोई और सागर क्वेश्चन है भी आपका अनुष्का? अभी ज्वाइन कर रहा है फिर से। सागर, आप लोग के पास अगर कुछ डाउट्स है तो मतलब सागर भी मतलब साथ में ऑल होगा राइट, ऑल राइट, डिस्कशन। ग्रेट। सो सागर इज जॉइनिंग अगेन, ही हैज डन विद द सागर, हाँ। वर्क अजीम। क्या सर? सागर इज डन विद द वर्क, ही हैज समथिंग टू डू, सो ना उसने बताया था। हाँ, वो बता रहा था कि मतलब अभी वापस आ रहा है, तो अच्छा शायद ठीक है, से वो अभी लेट्स ज्वाइन गो करेगा। टू द, या next because we'll follow the, like this, all the people who are video is on. If others wanted to ask and you cannot turn on the video, please write in the chat if you have any query and we'll ask the question. Well, Arya, what is your plan, what you are doing up? सर बेसिकली अभी तो सारे मॉक्स वगैरह दे रही हूँ, मतलब जितना हो पा रहा है, और उसे रिव्यू कर रही हूँ क्या क्या मिस्टेक वगैरह हो रहा है। और संजय सर को हम्म। काम काम वगैरह भेजना, और गैट का मेनली, मतलब मेरे को गैट का थोड़ा डर लग रहा है कि गैट का कैसे जाएगा, तो उसका थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर चलिए रही हूँ ठीक है, गैट। आज के सेशन में कुछ आइडिया हुआ आपको, व्हाट वी हैव डिस्कस यस अबाउट सर, द यस सर, एप्टीट्यूड? यस देखिए, सर। मैथ सिर्फ इस साल नहीं, पिछले 2-3 साल से मैथ के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। चांसेस हम्म। हाई ज्यादा है जो मैथ्स नहीं आएंगे। मोस्ट ऑफ यू डोंट लाइक मैथ्स प्राइमरीली। सेकंड,
एप्टीट्यूड ऐसा नहीं है जो आपका जो है नॉन वर्बल या वर्बल, आपका बहुत ही वो मेंटल एबिलिटी बेस्ड काउंटिंग क्यूब नंबर्स आते हैं। अब जैसे ऐसे बैंक का जो है वो लोगो आ गया, बेसिक क्वेश्चंस आ गए, या काउंटिंग वे आ गया, मेंटल एबिलिटी बेस्ड, जो आप अच्छा राइट जा रहे हो तो वहां से लेफ्ट कुछ ब्लड रिलेशन, कभी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी, और गलत भी हो गया एनआईडी में तो कोई वो बात का टेंशन नहीं है। शुरू ऑफ सेशन में बताया था, अगेन आई रिपीट, इफ यू आर स्कोरिंग 20 प्लस इज रियली ग्रेट, क्योंकि ये नंबर कोई आपसे लेने वाला नहीं है। 25 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है हमको सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं एनआईडी में। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ओवर हियर, राइट? व्हाई आई एम रिपीटिंग इट, क्योंकि आप देखो एक बच्चा जिसने ऑल इंडिया रैंक 19 लाया, द गुड थिंग इज सागर वाज रियली रियलाइजिंग इन द एग्जाम इटसेल्फ आल्सो, अच्छा मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। हम कई बार एग्जाम खत्म करने के बाद रियलाइज करते हैं जो मैंने ये गलतियां कर दी। एटलीस्ट ही वाज डूइंग इट देयर, ही हैज दैट कॉमन सेंस, एंड वो बेटर कर पाया वहां से। तो हमें क्या करना है, वो अटेम्प्ट करना है बेस्ट। तो आप जो एप्टीट्यूड या कुछ सोच रहे हो ना, ये हमारा एक वीक पॉइंट है। मतलब दिस इज व्हाट द ह्यूमन साइकोलॉजी इज, इट इज नॉट अबाउट आप जो नहीं कर रहे हो वो मिस कर रहे हो। जो कर रहे हो, अभी स्कूल पास हो जाओगे तो स्कूल को मिस करोगे। जैसे आर्या ने स्कूल कर लिया, देशना सेम स्कूल में, तो आर्या मे हैव सिट्स वन डे फाइन मॉर्निंग यूर फीलिंग है अच्छा जी स्कूल नहीं अब मैं जा रही हूँ। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस, वी आर ह्यूमन बीइंग, सो अंडरस्टैंड दिस, वी नीड टू वर्क ऑन पेपर मैनेजमेंट, है ना? 70 में अगर हमने 50 प्लस ले आया 75 में, सो वी आर वेरी मच श्योर, अगर पेपर पैटर्न सेम रहा तो, बिकॉज एनआईडी सरप्राइज यू इन द डे ऑफ द एग्जाम ऑल्सो, मेनी टाइम इट हैपेंस बिफोर, तो आप एनआईडी क्लियर कर रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड में 10 प्लस तो वर्स्ट सिनेरियो भी 10-12 मार्क्स आ ही जाएगा, राइट? ऐसे ही है। ठीक है, चलिए, और कोई आपकी क्वेरी आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना आपको? नो सर। ओके, अजीम, यू हैव हियर एनी इनपुट्स? नो नो सर, नो सर। Okay, Desna, please do share if you have anything to say. Yeah, I mean, right now I'm only doing a lot of mocks on GAT because my GAT isn't very strong, and every day I'm doing at least 15 to 30 2-minute human figures. And I was also attempting the final this 2024 2025 sample paper as well. I have one question. Since we have only around 6 or 5 days left, what should we focus on? Should we focus on CAT, our drawing, or should we focus on GAT and just get that done with? Well, सागर, Sagar, इसमें your तुमको input कुछ कहना here. है? I will say like focus on your drawing part. Like cat is a kind of part like you are walking on a road, you saw a sign, you know what's the answer for that, what it means. So that is a part like you learn it very before like that. But drawing is the part you can like improve every day, every minute. You practice on your line drawings, you can improve it. Either you can like watch a YouTube video on some GK question or some basic general awareness things, and just with that just draw with also. Like try to draw as much as you can. Free drawing. Don't copy. Just imagine what you imagine, draw that. Anything you can work on your line quality, draw what you like. Like don't force yourself to do anything. You have very few days left. So draw what you like. You like drawing machines, draw machines. But in that part, like if you are drawing a machine, try to make it very logical. Don't like imagine anything and draw. Make reasons for that, why you draw this, what helps this, like how it works, what's its function, how it is helpful for other kind of works. Also try to imagine different work from a same machine. Like if you're drawing a shoe, like how a shoe can be used differently. Try to think on these kind of parts, and also work on line quality is important, so work on that. If your drawing is like, if your line quality is not that good in a simple question, it's very high chances the marks will be deducted. So like work on line quality and easily you can like crack this. It's not a very tough exam. So I have made a lot of mistakes in my exam, like as I have done aptitude question wrong. I have like confused in the rules. Like at the end, I got something. I have like messed up my time management. Like at the last, I have drawn a frame in just 2 minutes and random anything in that.
So try to focus on your line quality, and even a simple solution can look good if it's presented good and it's logical. Yes, I also feel like if you want to increase your creative thinking and like to practice your drawing the objects or anything, I feel like like what I get improved from my like classes. So first of all, try like take one any object and try to present it in a uh, ortho view, okay, in 2D surface. Like just if you have one cube, then unfold it, okay, just open all the sides, okay, and then after or like opening it, try to visualize it in some different angle, just close it and try to rotate the shape from different angles, okay. So I think this kind of things will help you to like visualize things better. सागर ये हम लोग को Well, नहीं सिखा था we क्या वो जब हम लोग Yeah, के yeah, उधर पे yeah, किया yeah. था, तो ये बहुत ही हेल्प किया था हमको, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट्स को अगर ड्राइंग वॉइंग करना है तो मतलब कैसे उसको जानना है, समझना है उसको. Yeah, drawing, like try to view behind the first layer. Like first layer of anything is visual to your eye. Try to imagine what's behind that. What's a different story behind that working? Like how object is working from inside. Well, good. We'll move to the next student. This now, I hope you got a detail though. So we are moving to Fiona Maria now. You can, tell us about your prep plan and as well as if you have any query. So I kind of just started preparing for the NID exam very recently. So Correct. in creative, I've like done posters and storyboarding. Like I can say that I'm good at it, like not so bad. But the perspective questions, I have only practiced a little bit of them. So I was wondering, in the cat section, other than perspective and storyboard and posters, what are the other things that I should practice more that usually like come for the exam from the cat point of view? Yeah, Ajim and Sagar, like. Yes, I will suggest like be aware of your surrounding, of your environment. Like try to observe like everything. Don't like get is like don't remember anything for these things. Don't remember, just like understand and try to like know what it's like, why it is, and like everything. Just don't remember it. So try to see as much as the GK or like the general questions or current affairs So go and through about it, the you are design seeing it. In things. a part A, part B, you are seeing it, go through it right now, correct? Go through it. Don't try to Yeah. remember every single question answers. Well, Sagar, could you please give an input for part B, where Fiona is facing a bit of problem and feeling it like, okay, hey, I know two, three type of question, but I what else it may come in an ID like. Can you repeat the question? My network was like jammed or some kind of thing. Well, I'll tell you the thing. Fiona has said that she has done practice with poster stamps, kind of some little part of compositions, and she wanted to know storyboarding as well, right, Fiona? Storyboarding also have done it, and she wanted to know more about it. What comes in an ID? What has to be done, especially a cat part B part, design So part. basically, in NAD, the questions can be very surprising. So you can't like imagine like this kind of question can be there. But the point is, those kind of questions the NID give are very like middle class based kind of questions. Like imagine a railway station. Who has like gone through trains, traveled through trains, knows what a railway station can looks like. But the point is, who has imagined, observed the railway station is a very different story. People go travel and they just like roam around there and didn't remember anything. Like what different parts a railway station have. A railway station have a track, a basic ground, a staircase there, and in these are Indian railway stations, so obviously they are like broken or like there are potholes or kind of things, dirt here, there, gutka, pan, and the shed. So the point is observe the things and draw them neatly. Main point is that. Well, Oh, so in the yeah, you wanna ask something? Yeah, please carry yes. on.
In the second part, you said first we get the written paper, like the MCQs, that will be for 1 hour, and the second creative part will be for 2 hours, right? Yeah. Yeah, so how much, like, on average, like, I know you can't really say that this much time you have to attend to one question, but like, I would like to, like, kind of keep, like, something in my mind, like, oh, I Yeah. can't go So more than this much for one question, because, like, sometimes I get little over enthusiastic in one question and I don't notice the time, like, passing. you can like what I do is when I get my second part. The first part is very simple. You have 1 hour. There are multiple choice questions. You read the question, you know the answer. That's very simple. You don't have to think about that because there are no math related questions to think or like something. But in the drawing part, I divided my timing according to how I prefer to do the exam. I first read all the questions. My favorite one was the product design question. So basically, I given most of my time to it, and I also like looked at that uh, how big that question is, what is it's asking. Like there are marks also written on it, so you can divide your time according to the marks and the question you prefer. Like when you read a question, different kind of ideas surge into your mind like very rapidly. Very like basic to basic and complex to complex ideas start running through your mind. So you can easily like do that if you have a very good idea for a question and you know it's good idea, then try to give 5 minutes extra to that question rather than like thinking on the past question which is not like you are not getting the right answers. So try to like work on the questions you liked and you know the accurate answers, then divide the remaining time to the questions which are left, like the frames I left behind. I divided like in the last 15 minutes, I suppose I have three main problems. Two of my frames were not drawn. uh, One of there was a question about people, old man, about a train, how a window kind of the face wash kind of area in the train is dangerous for people. We have to like write about that. So one of my point was missing about we have to like write for 4 or 5 persons for that. So one of my person was not written yet, and the rule I messed up a rule in the board game. So these were the basically uh, parts left in my paper in the last 15 minutes. So how I divided my time was I wasn't getting any good ideas for the first question, so I like given it 2 minutes, like maximum. I will do it in the end. The simple idea for me is the giving money, and if I get a new idea, actually good idea, while writing for the person, old man in the train, how he like it's dangerous for a old man. If I get a new idea about that question, then I will shift on that question and give it more time if the idea is good. Otherwise, I will like work on different questions which I know I can work on well. So that's depends on time, how you are managing your time. It depends how the marks are divided on the question, how you likes a question, how your ideas are like emerging for you for the question. So that's Well, all. Fiona, I wanted you to thank you, Sagar, so much depth input. Fiona, I wanted you to share me your work also. I have shared my number though in the chat. Okay. And Yes, we'll sir. discuss more and more. You doodle, do it, and as they said, like observe the surrounding, because that a year back was a question is assemble the bicycle. Every time the NID surprise you in a cat part also, as they said, and the many time it has pattern has changed also. What is there? It may not be the same. So make sure when you are getting it part A, part B, read instruction carefully. Because I remember a year we are teaching a lot of aptitude. 70 was aptitude, 30 was design. They have flipped it completely, that it was 70-30, like 70 was a design and 30 was aptitude. From last few years it is 25 aptitude last 3 years and 75 design part. So it may change if I and I'm telling you in a ratio of 10 years. When I have given the NID, there was 10 marks of aptitude, 90 marks of design. And for a 90 marks of design, we have a 24 design question. I'm telling you 15-year back. So we go back, it's more and more. But yeah, we follow the current pattern. We'll do that and we'll see what we can improve. Well, quickly, we have three more here, Kirti, Nishat, and Parmeet. So we'll discuss with them. Meanwhile, others, if you wanted to share your queries, turn on your camera or maybe you can write in chat. Well, Kirti,
You tell me, how's your prep? What is the plan? How's everything going on? Everything is going on great, but still it's a little nervousness around. Yeah, that's the whole truth is before the exam, it is the people, a guy or a student who gonna be rank one also, they also have the same thing. They are also nervous. We never know, So right? it's fine to be nervous before the exam, but in the exam try to be calm and chill. Before the exam it's fine, whatever you do. Yeah. Just We'll before the discuss. exam, We'll connect. yeah. Yeah, Sagar, we will connect on chill session on Saturday. We'll have only chill pill session on Saturday to make you calm. All right. I mean, your Sagar, you guys know Ruhi was in NIFT Chennai during our times. She got all India rank one in general that year, and she was writing. I mean, preparing for her. I mean, there's a girl who got rank one in NID in 23 B.Des. So she was in NIFT Chennai. She was doing a regular study. From that, she found the time and all. I mean, I think you guys are in first year. She completed now 33. I mean, 23, 24, 25. Second year. She is now. So, well, Kirti, anything else you wanted to ask, share apart from nervousness, tension? Sir, actually, I get stuck by the scenery drawing when they give a list scene and you have to draw it. Like recently, I attempted a question and there they asked me a question like, you are sitting in a stadium and Hmm. the last final round is going on. The other team is about to make a goal and all the persons sitting around is nervous or excited. You have to draw the mixed scene of all those. Moreover, more a live scenario you're talking about. Kirti, Yes. can you write the question in the NID group? You are there in NID group, right? Yes, sir. Yeah. Ajim, can you please check this? Give the it's more like a live scene if kind of a goal movement. So action-oriented composition Yes. is needed. Well, Ajim or Sagar, anyone having input on it? Or should we move to the next? Oh, I don't get it. Like, what was the question for? Like, She will what we have write. to She will show? write the question. Yeah, she will write the question in the. That's what I said to write in the group. That would be better. First, you write the question in the Sir, group. in Okay. this group, right? In the meeting, right? No, not here. NID group. You are there in a Okay, sir. group, right? NID 25. There's a group for NID focus session. There you write. Okay. Okay, sir. Ajim is added. So it will be more clear. Somewhat I understand, but I don't know if I interpreted it the same what you're trying to say. Okay, thank you. We are quickly trying to wind up in a few minutes this session. Let's move to Nishat. Can you please, Jasmine, can you please ask your query? So actually, I have a query that like I decided to give the exam like at the last moment. Like मुझे सिर्फ निफ्ट में ही Mhm. जाना है एनआईटी तो मैं ऐसे ही Right. एक्सपीरियंस के लिए दे रही थी बट अभी एग्जाम पास में आ Mhm. गया तो लाइक आई एम लाइक सो टेंस्ड एंड मैंने लाइक निफ्ट में फोकस किया था तो लाइक एनआईटी के लिए मैंने कॉम्पोजिशन सीन ड्राइंग इतना प्रैक्टिस नहीं किया था एंड नाउ आई एम लाइक मैं क्या करूं अच्छा है मेरे हिसाब से वेलकम टू द सागर एंड अजीम ऑल्सो आप जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो एक दो और एग्जाम दे दो इनफैक्ट आई से इन जान तो फरवरी में आप बेटर फील करोगे जब आपका निफ्ट का एग्जाम होगा because you already handle the same pressure multiple times so now I mean, that kind of mindset you will be there so you will be more calm and composed before your NIFT exam. Well, Sagar or Ajim, you want to say something? So I have also given the NIFT exam, but the point was that before the like second part for the exam, for the NIFT results were out of NID, and I secured a rank. So I know I'm going to NID Ahmedabad. So I was like just chilling. I don't want to give the paper. I was just sitting there and looking at people. So in the NIFT second part, you have a lot of time. There in NIFT exam, there's no issue of time. They give you a lot of time to complete your works. The time management part is mainly for the NID. They are like very constraint based questions, and you have to complete them in time. So chill. If you are preparing for NIFT, NID is like making you ready for the time constraint kind of thing if something surprises happens. So just chill. Plus, I have समझ रहे हो आप? And if another you thing like I have to travel on the day of exam because like flight का टिकट नहीं मिला था और तो like मुझे just like 7 बजे मैं like दूसरे like सिटी में जाऊंगी और मुझे फिर जाके एग्जाम देना है नहीं नहीं, जितना हमको समझ में आया कि एग्जाम से पहले ना ऐसा फट से मत आओ, उसका तो एग्जाम देखने से मतलब माइंड like फ्रेश नहीं रहता टिकट्स है। अवेलेबल मैंने नहीं थे ना पर अगर किसी का ऐसा है तो मतलब ऐसा कभी मत करो, ठीक है? कि थोड़ा एक एक दिन ऐसा कुछ तो ले ही लो एक्स्ट्रा।
ताकि तुम उधर जाए और थोड़ा शांत से तुम्हारा दिमाग को क्लियर करे, और जाके जो कैंपस है उसको देख के आए, तब थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस आएगा, तुम उसको थोड़ा सा अच्छा से मतलब इतना नर्वस नहीं होगा बात अगर तुम करते पहले हैं से ही निशा, देख लिया आप तो। डिटेल भेजिए, विल कनेक्ट इफ रिक्वायर्ड, आई कनेक्ट योर पेरेंट्स आल्सो। थोड़ा आप ऐसा नहीं है 90 फोकस कर रहे नहीं कर रहे वो सेकेंडरी है, बट एग्जाम अच्छे से देना है, उसमें जो भी Like हेल्प चाहिए हम हाँ, लोग डिस्कस कर मैं और लेंगे। like ये टाइम मैं how to explain, like I'm not that tensed because मुझे एनआईटी में like नहीं जाना, तो like एग्जाम अच्छा हो ना हो, like मैं सिर्फ ऐसे ही दे रही थी, बट फिर भी like थोड़ा सा like हाँ वो हो जाएगा। वो आप एग्जाम के अंदर जाके एग्जाम दोगे तो अपने आप सीरियसनेस आ जाएगी कि मेरे को ये क्वेश्चन आया तो मुझे करना है, वो हो जाएगा। और जो आप बोल रहे हो कि आप मतलब लेट हो गए हो, मतलब उसी दिन आपको जाना है, तो वो टेंशन मत लो। एग्जाम देते वक्त आपको नींद नहीं आएगी। आप आराम से जो ट्रैवल कर रहे हो उसमें नींद ले लो, नींद वाला इश्यू नहीं हो। मेन पॉइंट इज दैट कि आप पहुंच कब रहे हो उस सिटी में। अगर आप आराम से 2-3 घंटा पहले पहुंच रहे हो एग्जाम के, तो आराम सेंटर चले जाओ और कहीं मत जाओ। अपना अपना कुछ खाया पिया है, ठीक है, और सेंटर चले जाओ। सेंटर पहले एक बार मिल गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मेन इश्यूज बच्चों के यही होते हैं कि अगर वो उसी दिन आ रहे हैं तो सेंटर ढूंढने में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो नहीं, बस मैं उस टू बात का आवर्स ध्यान पहले रखना। पहुंच जाऊंगी। हाँ, तो बस जैसे ही पहुंचो अपना फ्रेश जो फेस वॉश वगैरह कुछ करना है करो और सीधा सेंटर पहुंच जाओ। एक बार सेंटर देख लो फिर सब चिल, फिर कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। और ट्रैवल के वक्त फोन मत चलाना, अपना आराम से सो जाना। वेल थैंक यू सो मच, लेट्स मूव टू प्रवीण। आपकी क्या क्वेरी है और व्हाट इज योर प्रेप प्लान? सर अभी तो टाइम मैनेजमेंट पे वर्क कर रहा हूँ, जिसमें अच्छा आई एम प्रैक्टिसिंग दैट सो दैट आई कैन कट डाउन ऑन टाइम अ लिटिल। जैसे ह्यूमंस में आई कैन मेक ह्यूमंस, तो मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। एंड फिर रिसर्च में बहुत जा रहा हूँ, मतलब बायोमिमिक्री पढ़ ली, फिर आर्टिस्ट पढ़ लिए, उनकी पेंटिंग्स देख रहा हूँ, डिजाइनर्स देख रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ। एंड सर मेरा ये डाउट था, इन द एडमिट कार्ड दे सेड कि सिजर्स एंड ग्लू लानी है, तो एग्जाम में सिजर और ग्लू की जरूरत कहाँ पड़ेगी प्रीलिम्स में? ऐसा शायद से मतलब नेसेसरी नहीं होता कि वो यूज आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, पर आपको लेके जाना चाहिए। और सीजर अगर और ग्लू हमें भी बोला था, हमारे प्रीलिम्स में भी था कि लेके जाना है। तो वो यूज आना कोई कंपलसरी नहीं है, पर ये एनआईडी का पेपर है तो वो कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो जो बोला है वो तो लेके जाना कंपलसरी है। जो हाँ। एडमिट कार्ड में है, उसको फॉलो करना है, उसके लिए उतना सोचना नहीं है। जो किसी ने ये बोल दिया वहां पे ये देखा था, इंस्टाग्राम पे ये है, वीडियो में ये है, हाँ सर, ये इंस्ट्रक्शन को मुझे वही फॉलो पूछना करना है। था कि यूज कहाँ पे आ सकता है सिजर और ग्लू का। ये सोचना ही नहीं है, अभी लेके जाइए, अभी मत ये सोचिए। टू डी ग्लू का ना एग्जाम शायद से होगा, थ्री डी मतलब होगा, क्या होगा तभी देखेंगे। हाँ, या अभी अजीम आपको कुछ अगर बोले? ग्लू का कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी, मतलब हम जब प्रिपेयर करा था तो हमको बताया गया था कि ग्लू का प्रीलिम्स में इसलिए कम आता है, वो लोग ना कुछ स्टिक करने वाला, पेपर कटिंग करके फिर से स्टिक करके कंपोजिशन अगर बनाना करेक्ट है, करेक्ट, हाँ, टू डी वैसे वाला कंपोजिशन क्वेश्चंस। में कभी कभी यूज होता है, राइट। हाँ, ऐसा आ जाता है, तो उसमें आपको स्टिक करने रहते हैं एनआईडी उसमें में ना। नहीं आया है, एनआईडी में नहीं आया ये क्वेश्चन, निफ्ट में नहीं आया है, बट देयर आर प्राइवेट कॉलेज दे हैव गिवन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे ग्लू का हाँ, यूज और पर हुआ है। मतलब हमको भी ऐसा लगा, मेन तो क्या करना मेन कि पॉइंट ये है कि जो अभी ग्लू वाला जैसे उन्होंने बोला है, तो आप इस बात पे फोकस मत करो कहाँ पे आ सकता है। क्योंकि फिर आपका राइट। माइंड बस उसी एक चीज के लिए सोचेगा और वो पूरे टाइम वही सोचते रहेगा, और कोई अलग क्वेश्चन आ गया तो चांसेस है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो बस लेके जाओ, वहां पे क्वेश्चन आएगा और वहां पे आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें इतना कोई वो टेंस होने वाली बात नहीं है। It's a very important psychological input what Sagar has given here. When you put your energy on a one thing a lot, आप कुछ और सोच ही नहीं पाते। इसलिए बोलते हैं जो एग्जाम से कुछ आवर पहले, कुछ घंटे पहले पढ़ाई मत करो, सो दैट सबकॉन्शियसली योर माइंड विल रिलैक्स एंड कैन रिफ्रेम ऑफ ऑल द ओल्ड थिंग व्हाट यू हैव डन। तो इसलिए कोई भी जो करना है बस वो करना है, फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन को, सोचना नहीं है। एग्जाम पेपर सरप्राइजली पेपर आया, 4 घंटा लिखा हुआ है, मान लो हमें पता है एडमिट कार्ड सब जगह 3 ही घंटा है, मालूम है, इन्फॉर्म्ड है, बट अगर कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है तो उसको फॉलो करना जो पेपर में है। एप्टीट्यूड 1 घंटे का है, 30 मिनट का या 2 घंटे का, वो एग्जाम के दिन ही डिसाइड होना। और एनआईडी में अगेन रिपीटिंग इट, इट हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम, है ना। पूरा 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 चेंज एग्जाम के दिन पता चलता है जो अच्छा जी ऐसे हो गया। राइट हाँ, सागर, यू हैव और आल्सो हर्ड दिस या या एग्जांपल्स फ्रॉम या ये फैकल्टी होता है। साइड? और मेरे वाले में तो एक और भी हुआ था कि बहुत बार बोलते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करो, अपना एडमिट कार्ड लेके जाओ। तो ये आप जितना हो सके चेक करो। क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे एक फ्रेंड थी मेरे साथ, हम ग्रुप में जा रहे थे एग्जाम देने। तो हम वहां पे पहुंचे सेंटर, और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं कि अब 15-20 मिनट बची हैं, आधा घंटा कुछ बचा था कि अब डॉक्यूमेंट सबमिट करा के अंदर जाना है। तो उसने बोला मैं डॉक्यूमेंट भूल गई।
उसको हमने लिटरली चढ़ने से पहले अपने जो टैक्सी वगैरह करी थी उसमें चढ़ने से 2 घंटे पहले याद दिलाया था, जल्दी उठ गए थे उस दिन, कि अपने डॉक्यूमेंट चेक करो, डाल लो। उसने चेक किया, फिर भी भूल गई। तो वो पॉइंट है कि अब ज्यादा टेंशन लोगे तो ऐसी गड़बड़ हो सकती है, तो ज्यादा टेंशन मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर एक जगह संभाल के अच्छे से रख लो, वो पॉइंट है। उसके बाद फिर हम एंड में वहां पे शॉप्स हमने ढूंढी, लास्ट में भागे भागे उसका डॉक्यूमेंट मिल गया, तो वो तो ठीक है। एवरी सिटी एवरी एग्जाम सेंटर स्टोरी एवरी इयर्स। किसी न किसी बच्चे का ऐसे होते, एडमिट कार्ड प्रिंट ही नहीं लेके आते, फोन में लेके आ जाते। तो ऐसा ऐसा कैसे शायद से मतलब बहुत कॉमन है क्या? क्योंकि मेरा सेंटर में भी मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही ऐसा हुआ था कि मतलब आधे लोग वो वो भूल ज्यादा गए। टेंस हो जाते हैं, वो फिर पूरे टाइम पेपर का हम्म। सोचते रहते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्या आ सकता है, और वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें क्या लेके जाना है। यू नो और व्हाट, जो मतलब जैसे निफ्ट में तो ऐसा भी होता है कि निफ्ट बैंगलोर में है, एंड आई यूजुअली गो निफ्ट बैंगलोर सेंटर, तो एडमिट कार्ड में सब लिखा होता है, बट बच्चे निफ्ट पहुंच जाते हैं एग्जाम देने, क्योंकि एग्जाम सेंटर निफ्ट में नहीं होता है। स्टिल दे रीच टू एनआईएफटी, यू नो। सो क्योंकि हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है, सो मच, सो वी डोंट फॉलो द और इंस्ट्रक्शन, वी एक फॉलो या बियॉन्ड दैट। और एक और एग्जाम सेंटर के रिलेटेड, कि आप जब एग्जाम सेंटर पहुंचो तो पैनिक, अगर आपको लगे कि वो आपका एग्जाम सेंटर नहीं है, गलत जगह आ गए हो, तो पैनिक करने की बजाय एक बार आसपास चेक कर लो, कि मतलब उसके चारों साइड घूम के देख लो, क्योंकि जो हमारा एग्जाम सेंटर था जयपुर में, उसके 4 गेट थे सेंटर के, और उसके साइड में जो रोड थी उस रोड पे भी 2 गेट लगे हुए, पता नहीं क्यों, मतलब कुछ तो कॉलेज में था, तो वो रोड भी ऐसे बंद रहती थी। तो हम कोई तो गेट पे पहुंच गए, अब वहां कोई बच्चा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। हम इतने टेंशन में कि ये कहाँ पे पहुंचे, तो सेंटर गलत हो गया, ये हो गया, पर मैप पे तो यही दिखा रहे हैं। उसके बाद हम जैसे ही चले उससे आगे, दूसरी साइड दूसरा गेट था, सारे लोग वहां पे हैं। तो उतना टेंस नहीं होना, एक बार जाके सेंटर के आसपास देख लेना चारों साइड क्या चल रहा है, अगर वहां पे कोई नहीं दिख रहा है तो एक बार साइड में जाके ये देखो। बहुत ही अच्छी बात है सागर ने जो बताया, जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज आर प्रीटी कॉमन, सबके साथ होता हम्म। हो सकता है। आप फ्रंट नहीं बैक गेट पहुंच गए है ना, या यहाँ नहीं या वहाँ वहाँ पहुंच गए, तो एक एक हाँ, स्कूल के दो चार नाम होते हैं। कई कई सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। ये सब हो सकता है, तो इसमें पैनिक करने की बजाय आप एक बार आसपास देख लो आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गलत सेंटर पहुंच सकते हो इतना देख के। तो अगर आसपास देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, और जितना हो सके कि टाइम से, ठीक है, मिनिमम 1 घंटा तो पहले पहुंचो सेंटर में, कि अगर गलती से कुछ गलत हो जाए तो आप इजीली जा सको दूसरी जगह। और जो हमने देखा था मेरा एग्जाम सेंटर पे कि मतलब कोई कोई लोग ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि मेरा सामने जो मतलब स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, कोई कोई का मतलब इतना काँप रहा है ना वो लोग, कि देखो अगर इतना ज़्यादा नर्वस होगा ना तो हाथ पे कंट्रोल अच्छा से बना ही नहीं पाते हम लोग। तो इसलिए मतलब ये तो पक्का कोशिश करने की, उतना तो बिल्कुल डरना ही नहीं है। डर रहना चाहिए, एग्जाम का मतलब प्रेशर होना चाहिए ताकि आप उसको जल्दी जल्दी से मतलब अच्छा से कर पाए, मतलब पर उतना नहीं होना चाहिए कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्योंकि हमने देखा है मेरा मतलब ऐसा बैच लोग को कि मतलब वो लोग बहुत ही ऐसा नर्वस का वजह से ऐसा बहुत दिक्कत आ रहा था। तो प्लीज़ उसको मतलब आप लोग को भी देखना चाहिए। हमने क्या किया कि मतलब उसको ओवरकम करने के लिए पहले तो सब स्टूडेंट्स के साथ हमने बात किया था कि मतलब एग्जाम सेंटर घुसने के साथ साथ हमने हर किसी के साथ जो भी उधर पे मिला है हर किसी के साथ इंटरेक्ट किया है, और कोशिश किया कि मतलब क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, मतलब सब चीज़ जानने को। उसके बाद फिर से जब हम रूम का अंदर गए हैं तो फिर रूम का जो स्टूडेंट्स है सबके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश किया है। ये क्या करता है ना कि आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड कराता है ये, अगर आप सबके साथ बात कर रहा है ऐसा कर रहा है तो तब ज़्यादा नर्वसनेस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप हाँ, जाओ एकदम से इसमें शांत से दर दर के, ऐसा नहीं बैठना चाहिए शायद से। इसमें बस एक बात ध्यान रखना, आप जब भी इंटरेक्ट करो और आपके सामने वाला कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है उसकी मत सुनो, छोड़ दो, उससे इंटरेक्ट मत करो। क्योंकि सही बताऊं तो मेरे ग्रुप में वो मैं ही था जो ज्यादा नेगेटिव बोलता हूँ, कि ये तो गलत हो जाएगा, ये पेपर ऐसे खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो मुझे पता है कि वो दूसरों पे कैसे अफेक्ट करता है। मैं उनके डर, मुंह पे टेंशन देख लेता हूँ, फिर मैं चुप हो जाता हूँ कि नहीं, इतना नेगेटिव नहीं बोलना कि वो अगला डर ही गया पेपर के लिए। तो अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है आपके आसपास, उसकी मत सुनो, पहला पॉइंट। बहुत बहुत सेंसिबल और इनपुट पॉइंट है सागर। अजीम, दैट्स वेरी नाइस। We are heading almost 2 hours of this session, so we are winding up on this. We'll take a closing remark starting from Sagar, Azim, and rest is for students. Your NID exclusive group is open. Over there, you must be added. People who are like on it, so you can ask your query. There are few questions for NIFT also. GK कहाँ से करे, ये करे, बहुत ही common है। आप continue निफ्ट के क्लास में ग्रुप में पूछ सकते हैं, वी विल टेक इट अप इन फर्दर। अभी पूरा फोकस हमारा संडे का एनआईडी का एग्जाम है बच्चों का, है ना, और रेगुलर क्लासेज है। सो दैट्स ऑब्वियसली विल डिस्कस देयर। सो वेल,
Okay, so we'll go to the Ajim only first, and then we'll come to the Sagar. Well, Ajim, what is your closing remark for the evening? ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब जितना हमने देखा है मतलब क्लासेस में, क्योंकि हमने भी अटेंड मतलब ऐसे लिया था क्लासेस, सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। कॉन्फिडेंट रहना हम्म। है। और जो जो लाइन क्वालिटीज है उसको थोड़ा सा मतलब अभी तो इम्प्रूव करने का शायद से टाइम नहीं होता होगा, पर जब एग्जाम में कर रहा होगा तब थोड़ा सा माइंडफुल रहो कि मतलब आप क्या कर रहे हैं। और जो एलिमेंट्स है, माइंडफुल जो रहना, भी, करेक्ट। हाँ, जो भी आप एलिमेंट्स यूज कर रहा है, लॉजिकल होना चाहिए वो एलिमेंट्स। ऐसा नहीं कि एस्थेटिक दिखने के लिए, मतलब एनआईटी का क्वेश्चंस पे बोल रहा है, शायद से निफ्ट का कैसे भी होता होगा, पर एनआईटी वाला क्वेश्चंस, एनआईटी वाला एग्जाम्स में तो और भी मतलब एस्थेटिक के लिए कुछ नहीं लगाना है। और कंपोजिशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और बाकी जो है, बहुत स्टूडेंट्स तो मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। नर्वस मत रहो, थोड़ा चिल रहो, और आराम से क्रैक कर लेगा। ऑल द बेस्ट। वेल, तो वन लाइन में अगर हम बोले, जिम टॉपर है वो क्या बता रहे हैं आपको, जो फाउंडेशन मेकअप वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, बहुत डिटेलिंग आपको क्या करनी है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है अकॉर्डिंगली डिटेलिंग करनी है। जैसे सागर बता रहे थे, जो अगर क्रो एक एक एंगल से वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में देख रहा है, तो कंपोजिशन जिस एंगल से दिख रहा है उस एंगल का सारा डिटेलिंग बनाना है, वो सारी लाइंस, वो सारी विजिबिलिटी एंड डिटेलिंग आपकी दिखनी चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए। और एनीवे देयर इज एक्सक्लूसिव ग्रुप, आप वहाँ काम करिए, भेजिए, शेयर करिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, एंड द टीम इज देयर टू हेल्प यू आउट। वेल सागर, ओवर टू यू। आप सागर अभी या कहाँ हो? अभी भी आप जयपुर में हो छुट्टियों में? नहीं सर, अभी तो मैं होम टाउन आ रखा हूँ इधर गंगानगर, राजस्थान से। वैसे गंगानगर में हूँ मैं, जयपुर में तो मैं अच्छा, आपका होम प्रिपरेशन टाउन करने गया था गंगानगर बस। है? जी जी, वैसे मैं एकदम आप तो यहाँ पे क्या है, कोई डिजाइन का कोई है नहीं। और अच्छा, मेरा तो क्या आप था कि एकदम बॉर्डर पे हो यार, गंगानगर तो एकदम हाँ, स्ट्रीम बॉर्डर है। या तो नहीं। इसलिए हमारे यहाँ क्या डिजाइन का बेसिकली कोई था नहीं, तो मेरे को रिस्क नहीं लेना था। मैं कहा और नहीं तो चलो, 1 साल दे रहे हैं तो चलो अच्छे बढ़िया। से नहीं नहीं, करें। आई मीन जयपुर बहुत ही अच्छी जगह है, प्रॉब्ली आई विल कम या ऑल्सो। आपके यहाँ भी जो है अच्छा है, बढ़िया है। बताइए, आप अपना लास्ट मिनट टिप्स बताइए। या तो लास्ट में बेसिकली अजय ने जो भी बताया कि नर्वस नहीं होना है, एंड मेरा मेन ये है कि लास्ट में आप अपना जो भी वर्क है उस पे एक चीज पे फोकस मत रहो। आप थोड़ा थोड़ा हल्का हर चीज ट्राई करो, कि प्रोडक्ट डिजाइन भी कर रहे हो, पर्सपेक्टिव भी बना रहे हो, ताकि आपके दिमाग में वो रहे। और नर्वस तो ऑब्वियसली नहीं होना है, वो तो जितना होगे वो अब आपका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड नेगेटिव किसी का मत सुनो, अभी नेगेटिव एकदम छोड़ दो। खुद के दिमाग में नेगेटिव आ रहा तो भी ऐसे मत सुनो। अब बोलो कि नहीं, चिल है, एक एग्जाम है, अपने अच्छे से क्रैक करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको शांति से पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है। छोटी सी प्रॉब्लम पे भी लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं, कि मेरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन था एप्टीट्यूड में, वो 1 मार्क्स का ही गलत हुआ है, तो उसमें उतना पैनिक मत करो। उसको शांति से देखो कि ठीक है, 25 में से 1 मार्क्स गया, 24 बाकी है। तो हर क्वेश्चन में अगर कोई गलती होती है उसे कामली हैंडल करो। और बाकी लास्ट के डेज में अपना आराम से चिल रहो, ज्यादा मत सोचो। और अगर आसपास के तुम्हारे पास में पार्क वगैरह है घर के, या कोई भी ऐसी जगह है, मेट्रो है, कोई भी नॉर्मल रास्ते भी है, तो उन पे घूमो। दिन में आराम से 1-2 घंटे उन पे घूमो। अगर आप ड्रॉ भी नहीं कर रहे, हर जगह रुक के आप ड्रॉ नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है 2 घंटों में। 2 घंटे घूमो और बस ऑब्जर्व करो, ठीक है ये एक कार्ट है, इस कार्ट में ये पार्ट्स है, एक टायर है, इसमें ये पार्ट्स है, इतने नट्स हैं। इनको चलते चलते ऑब्जर्व करते रहो, तो आपके दिमाग में वो फीड होते रहेगा। और अगर आपको जरूरत आई तो कामली सोचोगे तो याद आ जाएगा। बस इतना आराम से करो। और जो हमको ऐसा मतलब एग्जाम का रिगार्डिंग एक चीज़ बोलना था, कि क्वेश्चंस मतलब एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हो सके तो मतलब चाहे वो जैसा भी दिख रहा हो, बना के तो पक्का छोड़ना ही छोड़ना है। हाँ, चाहे तुम्हारा आंसर कितना भी absurd हो, कि कितना भी आपको लगे कि ये क्या है, इतना सिंपल आंसर तो कोई भी बना सकता है, पर अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा है और टाइम नहीं है, तो वही आंसर बनाओ। उसको खाली मत छोड़ो, और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। एक बार टाइम लगा के ढंग से क्वेश्चन रीड करो। हाँ, क्वेश्चन पहले मतलब पूरा पढ़ो, उसके बाद मतलब एक एक करके जाओ। उसका तो क्वेश्चन को देखो कि कितना मार्क्स का है, कितना टाइम का है, डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट ना पूरा क्वेश्चन का ऊपर ही डिपेंड करता है। अभी हम लोग बोल देगा ना तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो आपको उधर जाके डिसाइड करना पड़ेगा कि मतलब हाँ, हमको इतना टाइम में इतना करना पड़ेगा। तो आपको उधर मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि अभी से ही खुद को प्रेशर में डालने का ट्राई करते रहो। मतलब अभी तो शायद से मतलब टाइम इतना नहीं बचा है, पर ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अभी मॉक टेस्ट तो सब दे भी रहे हैं, तो भी उसमें ऐसा ट्राई करो।
अभी Well, मेनली so चिल रहो, अगर तुम्हें कोई लगता है तुम्हारा वीक पॉइंट है तो उस पर वर्क करो, पर साथ साथ में बाकी सारे काम भी करते रहो, उन्हें मत छोड़ना। या आपको लग रहा है कि एनाटॉमी वीक पॉइंट है तो आप उस पर लग जाओ और आप पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना ही छोड़ दो, तो वो मत करना। पर्सपेक्टिव भी ड्रॉ करो, सबको अपना टाइम दो, और हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं। मैंने बहुत गलतियां की है पेपर में, फिर भी क्लियर हो गया, तो हो जाएगा। Well, so it was really wonderful. We both have given a nice input, and I must say that जो आप लोग कंटिन्यू करिए अभी काम, और आप जो भी करोगे ग्रुप में डालोगे बेस्ड ऑन रिव्यू, विल अगेन प्लान इट आउट। और आपके क्वेरीज, आप क्वेरी भी ग्रुप में डालेंगे, ऑन बेस्ड ऑन दैट वी विल प्लान अगेन अ टॉपर टिप्स क्लास सेशंस। एंड आज की इनपुट क्लास के लिए अगर आप लोगों का कोई क्वेरीज है या आप लोग बताना चाहते हो क्या है, तो क्विकली यू कैन गिव इनपुट्स। क्विक वन एंड वन टू ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट। कैसा था, कुछ क्लियरिटी मिला, आइडिया हुआ, क्या हुआ? एवरीबॉडी सो क्वाइट, यस, नो, shaking head, okay. Kiss Desna, you wanna say something? Is very active in online, offline, all the class I always seen. Like, Yes, it was a really helpful class considering a little scattered my thoughts were about how to approach now that there were only 5 days left, but now I have a clear understanding on what I should do. So it was very helpful. okay, great. अनुष्का, आपका पहले का भी एक्सपीरियंस है, ऐसे आपने खुद भी एग्जाम दिया है, so how do you see? तो काफी अच्छा आइडिया आ गया आगे के 4 दिन 5 दिन किस तरह से हमें वर्क करना है, किस तरह से प्लान करना है अकॉर्डिंगली। और साथ ही में एग्जाम सेंटर में मेरा 200 किलोमीटर दूर है वैसे भी, तो मैं तो एक दिन पहले ही जाने वाली हूँ। तो वहां पे जाके भी Very क्या good. करना है उसका भी काफी अच्छे से आइडिया आ गया। सो इट वाज गुड। Okay, so you are following the theme, right? Very nice. Yes, Prabmeet, you wanna say something, or should we? I mean, we will conclude after this. Yes. हाँ सर, वही थोड़ा दिमाग की शांति हो गई अब, थोड़ा सा वो हो रहा था। Okay, okay. And thank you, Ajim and Sagar. Sagar, is it too cold? I mean, it seems you are wearing a coldest clothes. I mean, काफी ऐसे आपके यहाँ? Ganganagar, it's like, yeah, for now it's like 12 degree, 12, 13 degree. Okay, डे में कैसा तो होता है? कहाँ पे? जयपुर? नहीं नहीं, जहाँ आप हो वहां पे डे में, डे इज ऑल्सो कूलर? हाँ, days is like 19 degree maximum, 19-20 degree। अच्छा, ठंड बढ़ गया वहां पे? या, और अभी जस्ट अभी और ज्यादा, 1-2 दिन में ठंड ज्यादा बढ़े अभी। ओके ओके, इधर ज्यादा बढ़ा है। और जयपुर इज अ मोर हॉटर लाइक कंपेयर टू, राइट? हाँ, उधर नहीं है, उधर इतना नहीं है। Okay, okay. Well, so have a lovely evening, everyone. Go have your dinner. Take care. Good night. We'll conclude this session now. And once again, thank you, Ajim and Sagar, for this lovely session. Your inputs will be required in थैंक यू last सर। minute. ग्रुप में बता दे रहा ना इन लोगों को। Thank you, everyone. Bye bye. Okay, thank you everyone for attending this class. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन। Oh, Sagar, bye. थैंक यू सर। Bye. Thank you.